Dear students, our next chapter is chapter number 16, the beginning of the freedom struggle. The previous lesson we have learned the India's first war of independence. In this lesson, the beginning of the freedom struggle. Freedom struggle means जैसे आज़ादी मिलने के लिए कैसे स्ट्रगल स्टार्ट किया है उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे. ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857 kindled an urge in the people of India to gain freedom from the British rule. They realized their shortcomings and worked towards removing them. 1857 का रिवोल्ट के बाद फर्स्ट वर्ल्ड इंडिपेंडेंस वार के बाद लोगों को समझ में आया है कितना वो अच्छा है और हम लोग का शॉर्टकमिंग्स क्या है. वो ब्रिटिश लोग को इधर से भगाने के लिए वो लोग ज़्यादा इंडिया पीपल कोशिश कर रहे थे. ओके, after the first half of the 19th century, politicians' associations began to form. But these associations were centered around big cities like Kolkata, Bombay, and Madras. The need for setting up an all India or Indian organization to represent the will of the Indian people as a whole as being felt. This need gave birth to the Indian National Congress. Okay. ये उसको रिमूव करने के लिए सब सोच रहे थे. उसी टाइम में ब्रिटिश लोग के बारे में ब्रिटिश लोग को रिमूव करने सोचे है. उसी टाइम में लोग ये ज़्यादातर सिटी में हुआ था, लाइक कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये सिटी में स्टार्ट हो गया था. इसके वजह से सब लोग एक ही जैसे है, एक ही सब कुछ कर सकते हैं सोचकर ये लोग एक उसको फॉर्म किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है. उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड अपॉन द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट अलाइन ऑक्टेवन ह्यूम, A.O. Hume, who founded the Indian National Congress. A.O. Hume, the full name is Alan Octavian Hume. Okay, the union. Then first conference held in Bombay in 1885. The union assumed form of the Indian National Congress. Indian National Congress का first conference start हो गया था 1885 में हुआ था. Okay, who founded that? A.O. Hume. Okay, then the aim of Indian National Congress was to draw the attention of the British towards the difficulties and demands of the Indians. It did so through petitions and persuasion. That means इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम, उसका लक्ष्य यही था, ब्रिटिश वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश लोग का अटेंशन लेना है और हमारा डिफ़िकल्टीज, इंडिया लोग का डिफ़िकल्टीज ब्रिटिश लोग को डिमांड करना है. एंड उसके बहुत लोग भी इसको लीडिंग कर दिया था. Is in that we can say the moderate phase of the Congress were there. They are Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji and Sudhendranath Banerjee. उसके लिए दो फेस हुआ था. उसमें एक मॉडरेट था और एक्सट्रीमिस्ट था. मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दो फेस में किया था. मॉडरेट फेस में गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नवरोजी एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे. They believed, the moderates believed in the British sense of justice and felt that the British government will accept their genuine demands by bringing reforms in their administrative policies towards Indians. मॉडरेट्स बिलीव किया था ब्रिटिश लोग सब हम लोग थोड़ा डिमांड्स करेंगे तो वो लोग वो एक्सेप्ट कर कर हमारा रोल में वो आएगा, हमारा उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में हमारा डिमांड में एक्सेप्ट करेगा, मॉडरेट लोग सोचे थे. As the British government did not pay any attention to the demands of the moderates, some of the Congress leaders, especially the younger element, got disappointed with the government and realized that the requests that the beginning are of no use. Therefore, they advocated direct action. The leaders with this ideology were called the extremists. Moderates क्या किया है, सीधे उन लोगों को हमारा डिफ़िकल्टीज और डिमांड सब बोल दिया है. उन लोग उस ऐसे सोचा है ये हमारा लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये पॉलिसी में आएगा, उसके बाद हम लोग ये सब मिल जाएगा सोच रहे थे. लेकिन ये इसमें है थोड़ा यंगस्टर्स था, मीन्स थोड़ा यूथ वाला लोग थे. उन लोग ये सब उन लोग नहीं कर रहे थे तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया. डिसअपॉइंट होने के बाद डायरेक्ट उन लोग एक्शन करने लगा है. डायरेक्ट मीन्स थोड़ा वायलेंट होने लगा है. सो उसको हम लोग बोलते हैं, दो आइडियोलॉजी वैसे है, दे आर कॉल्ड मॉडरेट्स. ओके,
So in that moderates, the main leaders were Vipin Chandra Pal, Lokman Bal Gangadhar Tilak, and Lala Lajpat Rai. So we say Lal Bal Pal. Okay. Popularly we call them Lal Bal Pal. Popularly we call them Lal Bal Pal. So who are that Lal Bal Pal? Bibin Chandra Pal, Lokmanya Bal Gangadhara Tilak, and Lala Lajpat Rai. Okay. So these are the moderates and extremists. Then we about the partition of Bengal. How the partition divide किया है बंगाल को. The British government announced the idea for the partition of Bengal in 1904, but the partition took place in 16th October 1905. The partition was carried out by Lord Curzon, the British Viceroy in India. So mainly we can when we learn about the history and the role of British, we can understand that the mainly British government means taken the policy of divide and rule policy. Divide and rule policy means इंडिया में इंडिया को डिवाइड करना है. इंडिया लोग को मीन्स लोगों पार्टीशन किया है स्टेट को, लेकिन मीन्स जगह को डिवाइड किया है, लेकिन उधर का लोग को डिवाइड कर कर रूल करेंगे तो मीन्स डिफरेंट व्यूज़ होना चाहिए. डिफरेंट लोग को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तभी ना लोग को सेपरेट करने के लिए चाहते थे. इंडिया लोग को सेपरेट करना चाहते थे. सो द फर्स्ट वी कैन से द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल में लोग डिवाइड किया है. सो दैट इज हैपेंड इन 1904 दे स्टार्टेड, बट इट हैड हैपेंड दैट 1905 16 अक्टूबर में हुआ है. ओके. Then we can say about the Swadeshi movement. The same things, children. Every classes now I will explain shortly. That means the important things I will explain, and other things you have to read and understand. Means nothing is there to understand. The important things I am explaining, but you have to read the lesson 2-3 times. The next one is the Swadeshi movement. The Swadeshi movement had its genesis in the anti-partition movement, which was started to oppose the partition of Bengal. People decided to boycott British goods. The industrial goods of England flooded in the Indian markets. In fact, the Indian cottage industry had died away because the influx of in British goods. The nationalists decided to boycott British goods. British goods were burned in bonfires, and the movement resulted in a great political awakening. What is that? The Swadeshi movement means anti-partition movement which started to oppose the partition of Bengal. बंगाल में जो partition किया है उसको oppose करने के लिए, against करने के लिए एक मीन्स स्टार्टेड हो गया था. द मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वही है स्वदेशी मूवमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? दैट मीन्स अर्लियर वी हैड मेड एवरीथिंग. दैट मीन्स गुड्स बनाते थे, इंडिया पीपल गुड्स बनाते थे, like clothes, whatever things, handy craft items, everything they have made. But when Britishers came, ब्रिटिश लोग जब आए थे, उन लोग अपना जगह से सामान लेके आने लगा है और इंडिया लोगों को भेजने लगा. भेजने मीन्स सेल करने लगा है पैसा में. सो ज़्यादा पैसा भी लो लेते थे, अपना सामान लेने के लिए मना भी किया है. सो बहुत ज़्यादा थिंग्स ब्रिटिश लोगों का जगह पर आया हुआ है, वो सब लोगों को दे दिया है. लेकिन ये बंगाल पार्टीशन के अपोज कर कर ये लोग बोल दिए स्वदेशी मूवमेंट, अपना सामान सिर्फ खरीदना है और ब्रिटिश लोग का सामान खरीदना नहीं है बोलकर. मीन्स some people who is that politicians and other people, they started that political awakening हो गया है. सो ऐसे किया तो सब लोगों को एक मीन्स सब लोग उड़ गया है. इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, अपना सामान यूज़ करेंगे, दूसरे का सामान. दैट मीन्स ब्रिटिश लोग का सामान हम लोग नहीं ले लेंगे. इसके वजह से बहुत ज़्यादा सामान ब्रिटिश मीन्स मार्केट में इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सामान आ गया था. ओके, दिस इज़ द स्वदेशी मोमेंट. ओके, बॉयकॉट मीन्स not use. Okay, means avoid that. Okay, the next one is Minto-Morley reforms. What is that Minto-Morley reforms? The British intensified their policy of repressing the extremists. Who are extremists? That directly means extremists means they will demand some problems of Indians and the difficulties of Indians, and they believed that the British government will accept that they are the extremists. Okay,
So they have intensified their policy of repressing the extremists को लो ले लिया है. उसके बाद they simultaneously tried to pacify the moderates through certain reforms. In 1909 they introduced the Indian Council Act, popularly known as the Minto-Morley reforms. So 1909 में Minto-Morley acts, actually what is the name, what was the name, Indian Council Act, popularly वो तो नो ऐसे बोलते हैं मिंटो मॉर्ली एक्ट. ओके, इन दिस एक्ट enlarged the membership of Central Legislative Council and the Provincial Legislative Council for Indians. About half of the members were to be elected members. They were not be elected by the people but by the influential sections of the society. Okay, this is the Minto-Morley Acts. The next we learn about the growth of revolutionaries. What do you mean by revolutionary? Means जो इसके लिए पॉलिटिशियंस, इसके लिए जो लोग लीड किया था, मीन्स मेन लोग, इसलिए जो लड़ाई के लिए मेन लोग थे उसको हम लोग बोलते हैं revolutionaries. Okay, the Indian youths were feeling that only the boycott and the peaceful movements were not enough to drive the British out of the country, so they adopted the path of violence. Revolutionary means violent होने वाला लोग है. इसका मतलब ये लोग समझ में पीसफुली और बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता है. ब्रिटिश लोग को थोड़ा वायलेंट में मीन्स जाए करेंगे तो मीन्स थोड़ा वायलेंट एक्शन से करेगा तब वो लोग इधर से निकल जाएगा. सम पीपल यूथ स्पेशली द यंगस्टर्स सोचा था. ओके, रेवोल्यूशनरीज बिलीविंग दैट द एम्ड revolution reformed secret groups. These groups were mainly concentrated in Bengal, Maharashtra, Bihar and Punjab. Revolutionary secret काम करने लगा है. Secret मतलब means छुप